Hello to all those who are watching this video, and this is the video for the students of class 12th biology. Okay, the topic I have taken from the unit 5 ecology. Okay, and the chapter number is 13. So Nivedita is here by bringing the details of the topic response to abiotic factors. Okay, how the different organism they give response to abiotic factors we will study, means what are the ways. So let's see. Begin with the term homeostasis. This is very important to know the term homeostasis because everyone try to establish the homeostasis. So this is the ability of an organism to maintain the constancy of its internal environment despite varying external environment कंडीशन. ओके, मीन्स बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, उसको कांस्टेंट मेंटेन करना, भले ही बाहर की कंडीशंस जो हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो वेरी होते जाएं, बट कांस्टेंट कंडीशंस को मेंटेन करना, दैट इज होमियोस्टैसिस. ओके, सो means for what to establish the homeostasis, what are the different ways. So begin with this topic, response to abiotic factors. It determines how organism can cope or manage with stressful conditions of the habitat. Okay, during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. Okay, so the organism should try to maintain the constancy, sorry, constancy of its environmental conditions. Okay, which conditions? Internal environment. Okay, तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्राई करता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखा जाए, एंड दैट इज होमियोस्टैसिस. ओके, and what happens, the external environmental conditions that tend to upset its homeostasis, क्योंकि वो जब एक्सट्रीम हो जाती है तो डिस्टर्ब करने लगती है. ह्यूमन बींग्स कैन मेंटेन देयर होमियोस्टैसिस बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स. ह्यूमन बींग्स ऐसा कर सकते हैं, जैसे बहुत गर्म होता है तो एयर कंडीशनर लगा लिया जाता है समर में, तो उस और विंटर में जब बहुत ठंड होती है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाता है और हीटर लगा लिया जाता है. तो ह्यूमन बींग्स के लिए ये पॉसिबल है, बट बाकी के लिए ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो द वेज बाय विच अदर ऑर्गेनिज्म कैन कोप अप विथ एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, वो तो नहीं बदल सकते अपने सराउंडिंग्स को, तो उनके पास कौन से वेज हैं. ठीक है, तो वो वेज हैं जिसके कारण वो एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव कर सके. तो दे हैव द ways are regulate, conform, migrate and suspend. So begin with the how does homeostasis occur, that is the same thing. So first way is regulate. It is to maintain homeostasis by ensuring constant body temperature, that is thermoregulation, and constant osmotic concentration, that is osmoregulation. Means जो बॉडी का फ्लूड है उसका कंसंट्रेशन भी बना के रखना, कांस्टेंट बना के रखना, और बॉडी के टेम्परेचर को भी कांस्टेंट बना के रखना. Okay, this is regulation. So some organisms maintain homeostasis by physiological and sometimes behavioral means. All the birds and mammals and few lower vertebrates and invertebrates are कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. तो सारे मैमल्स ऐसा कर सकते हैं, बर्ड्स भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी हैं. ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं और बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रख सकते हैं. ओके, लाइक वी हैव द एग्जांपल इन मैमल्स.
During summer, sweating occurs profusely and the evaporation brings down temperature of the body. जैसे गर्मी में हमें पसीना आने लगता है, तो पसीना इसलिए आने लगता है जैसे हवा वहाँ से जाएगी तो हमारी बॉडी को ठंडा करते हुए जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बना रहेगा. एंड इन मैमल्स ड्यूरिंग विंटर शिवरिंग अकर्स, जब ठंड होती है हम ठंड में कांपने लगते हैं, शिवरिंग होती है. एंड विच इज़ अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज दैट प्रोड्यूस हीट एंड रेजेस द बॉडी टेम्परेचर. तो ये एक्चुअली एक तरीके का कोप अप करने का तरीका है ये. तो ऐसा होने से, शिवरिंग होने से हीट प्रोड्यूस होती है और जो बॉडी टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प करती है. एंड प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर. पर प्लांट्स के पास ऐसी कोई भी प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल एक्शन नहीं है. Conform. Conform means internal environment of conformers changes with external environment. मतलब बॉडी का अंदर का environment जो है बाहर के accordingly change होते रहता है. मतलब this is not constant one. Okay, so about 99% of animals and almost all plants cannot maintain a constant internal environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. Okay, बदलता जाता है वो. In aquatic organism, the osmotic concentration of the body fluids changes with that of the osmotic concentration of the ambient water. उनमें भी बदलता रहता है aquatic organism में, जितना बाहर का है उसके accordingly हो जाता है उनका. So these animals and plants are called conformers. तो ऐसे जो internal environment को बदल लेते हैं as per बाहर के environment के accordingly, वो conformers होते हैं. So it can be concluded that during the course of evolution, some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they simply conform. Now the question is, small animals are rarely found in polar regions. Polar regions में small animals नहीं होते, rarely उनको देखा जाता है. तो ऐसा क्यों? Small animals have large surface area compared to volume, so they lose heat easily in cold and have to expend energy to generate body heat. Okay, so this is why the small animals are not found in polar regions. But if stressful extreme conditions are localized or remain for short duration, then alternatives are, फिर क्या हो सकता है extreme condition कुछ समय के लिए हो. The option is migrate or suspend. Okay. Thermoregulation, जैसे कि मैंने बताया, constant body temperature को maintain करना, this is energetically expensive for many organisms, and this is especially true for small animals like shrews and hummingbirds. So heat loss or gain is a function of surface area. Since small animals have large surface area relative to their volume, okay, so they tend to lose body heat very fast when it is cold outside. Okay, so this is the reason. Now migration or migrate, that is movement from stressful habitat temporary to hospitable area and return when stressful period is over. कुछ समय के लिए किसी और जगह पे चले जाना जहाँ पे conditions good हैं और उसके बाद वापस अपनी जगह पे चले जाना. This is migrate. So it is the temporary movement from stressful habitat to a more hospitable area and return when the stressful period is over. So many animals, particularly birds, during winter undertake long distance migration to move hospitable areas. Every winter, we have this example. Every winter, the famous Kiolado National Park in Bharatpur, that is in the Rajasthan, hosts thousands of migratory birds coming from Siberia and other extreme cold northern regions every winter. Okay, so we have this example. Now suspend. Suspend is what? Under unfavorable conditions. When conditions are not good, bacteria, fungi and lower plants slow down their metabolic rate and forms a thick walled spore to overcome stressful conditions. These spores germinate under onset of suitable environment. ये जब तक रहते हैं उसी कंडीशन में रहते हैं
और जब कंडीशंस अच्छी होती हैं, सूटेबल होती हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं. In higher plants, seeds and some other reproductive structures serve as mean to tide over periods of stress. They reduce their metabolic activity and undergo dormancy. Dormancy means sleeping period. Okay. And some animals which fail to migrate might avoid the stress by escaping in time. For example, bear undergoes hibernation. ठीक है, जो पोलर बियर होते हैं, ये पोलर बियर हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर के समय में. सम स्नेल्स एंड फिश अंडरगो एस्टिवेशन. जो गर्मी में डॉर्मेंट होते हैं वो एस्टिवेशन कहलाता है, जो विंटर में होता है वो हाइबरनेशन कहलाता है. ओके. तो कुछ स्नेल्स भी ऐसा करती हैं, फिशेस भी ऐसा करते हैं समर में. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी zooplanktons and lakes and ponds enter diapause. You have to keep in mind the word diapause. Diapause is it is a stage of suspended development. जो कौन शो करते हैं? Zooplanktons. So you can get here the summary of that slide, and this is diagrammatic representation of organismic response. So thank you so much.